देखिए 11:15। मैम आज लास्ट क्लास। मैम आज लास्ट है। हाँ क्लास में क्या समझ में आएगा, सिर्फ लिखना बचा है बस। शंघाई कोऑपरेशन चल रहा है आईआर, और लास्ट क्लास है सर। क्या बात कर रहा हूँ। So good morning to everyone. So how are you all? चलिए, so let's start the class. So let's begin. So we have so all settled. Chaliye then let's start. So we are discussing the India SCO, right? And we have discussed the historical perspective, right? Like SCO, SCO was name given in which year? It was established in 1996 with the Shanghai 5, ठीक है? और when Uzbekistan joined it in 2001, the Shanghai 5 became known as an SCO, ठीक है? Then in 2005, India or Pakistan has given an observer status in the Shanghai. So here we have seen that in 1996, organizations called Shanghai 5 was established, right? Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, China and Tajikistan. So these 5 came into the alliance known as a Shanghai 5. Then in Uzbekistan, which joined the group in 2001. Okay, so this joined the group in 2001, and after joining Uzbekistan 2001, the nomenclature of Shanghai 5 was changed to Shanghai Cooperation Organizations. ठीक है, उज्बेकिस्तान के ज्वाइन करते ही ये जो आपका शंघाई 5 था, इसका नाम क्या बदल गया? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज SCO. Facilitations, economic facilitations, trade and everything. So economic facilitations in this region. It is basically connecting this Central Asia to organize. In 1996, after the disintegrations of Russia, it wants to join again into the alliance with when the world become a unipolar. ठीक है, 1991 के बाद यूनिपोलर हो जाती है. अमेरिका हैज बिकम द सुपर पावर. सो रशिया नाउ वांट टू एंगेज इटसेल्फ विद द अदर नेशंस आफ्टर डिसइंटीग्रेशंस. सो दे कम अप विद द शंघाई 5, राइट? फिर उसमें उज्बेकिस्तान ऐड होता है. देन इन 2005, India and Pakistan was got an opportunity as an status and observer states, right? Observer states की तरह इंडिया और पाकिस्तान को इंक्लूड किया जाता है. Then in 2017, this India and Pakistan become a full member to SCO.
Shanghai cooperations. Is this clear? Right? So after that, this SCO, when India become a member to this, the relations with the South Asia has been established. Central Asia with the India. Is it clear? ठीक है? So this is all about this India and SCO. Now let's write down this relations between India and SCO. Is clear? This already we have discussed in the last class. लिखिए, in 1996 we will just write an introduction related to SCO. In 1996 Shanghai 5 FIVE Shanghai 5, write down in bracket China, Russia, Kazakhstan, China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan. Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, China. These are the members of Shanghai 5. Bracket close. For measures collaboration in Eurasia. Collaboration in Eurasia on regional geopolitical, geoeconomic and geostrategic challenges. Geoeconomic and geostrategic challenges. ठीक है, to counter this in the, and this has happened just post Cold War period. ठीक है, Cold War end हो जाता 1990 after the disintegration of USSR. तो now Russia wants to establish and after 1991 अगर आप देखें तो there are many various forums, regional groupings has been started up collaborating with each other. Disintegration of Russia, Cold War 1991. 1991 marked the end of the Cold War, which was started after 1945 after Second World War. ठीक है? Next, in 2001, the Shanghai 5 renamed as Shanghai 5, not Shanghai 5th. Shanghai 5, not 5th. आपने 5th लिखा है. 5 FIVE. 5th और 5 में अलग है ना. Roman is 5th. Here goes. In 2001, the Shanghai 5 renamed as SCO when Uzbekistan joined the groupings. In 2001, the Shanghai 5 renamed as SCO, Shanghai Cooperations Organizations, when Uzbekistan joined it, or after inclusion of Uzbekistan into the Shanghai 5. Next point. In 2005, phone silent कर लीजिए. In 2005, India and Pakistan and Iran were granted observer state
एंड इन 2023 ईरान, सॉरी आप क्या लिख रहे हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ईरान बिकम ऑब्जर्वर स्टेट इन 2005, राइट? ठीक है, full stop, continue the point. In 2017 India and Pakistan become full members of SCO. 2017 in 2017 India and Pakistan become full members of SCO, and in 2023 Iran was made full member of SCO. This year the Iran has become a member of SCO. ठीक है, making the SCO world's largest regional organizations, world largest regional organizations clear. Next point, Belarus, Mongolia and Afghanistan. Belarus, Mongolia and Afghanistan currently have observer status clear. ठीक है, next point, the SCO provides India with an opportunity. SCO provides India with an opportunity to protect, promote and projects its geostrategic, protect, promote and project its geostrategic and geoeconomic interest. ठीक है, next point, SCO also provide India with a platform to reaffirm. SCO also provides India with a platform to reaffirm its commitment to revive revive and deepen its centuries old civilizational, spiritual SCO also provides India a platform to reaffirm its commitment to revive and deepen its century old civilizational depend DEEPEND depend गहर और depend और भी बहुत वो करना, depend its centuries old civilizational, spiritual and cultural ties with the other members of grouping. Next point, in September 2022, India assumed SCO's rotating presidency. In September 2022,
India assumes SCO's rotating presidency and held 14 ministerial level meeting and SCO summit in July 2023. An SCO summit in July 2023. It's clear? So this is an introduction related to SCO and India in the current perspective. ठीक है? Now write down the India and SCO as you accessing the priorities. India and SCO assessing the priorities means relations between India and SCO. ASSESSING assessing the priorities. First point, in 2023 when India had a summit of SCO summit, in 2023 SCO summit, India South cooperation for cross-border terrorism. In 2023 during SCO summit, India South cooperation in cross-border terrorism. SOUGST, South cooperations in cross-border terrorism, comma, inclusive growth in Afghanistan, and connectivity but respect to sovereignty and territorial integrity of member countries, and connectivity but respect to sovereignty and territorial integrity of members country. Country or members nations of members country, जो country member हैं SCO के, their sovereignty and territorial integrity must be preserved and respected. ठीक है? Is it clear? Now first subheading under India and SCO, connectivity. Now under this connectivity we are going to write all this Chabahar port, INSTC, जो साउथ सेंट्रल एशिया में जो बनाया है इसने, ठीक है, with the Russias, and then Chabahar port. Then in Afghanistan the rail line and road BRO by BRO Zalans to Delaram, right? वो फिर हम connectivity में we are going to write all this, just लेकिन highlight pointed that we have already done with the individual Afghanistan, Iran and उनके साथ हमने already कर लिया है वो, ठीक है? So write down, poor connectivity between India and SCO region is biggest hindrance. Poor connectivity between India and SCO region. Poor connectivity between India and SCO region is the biggest hindrance to trade and development. Several connectivity projects initiated by India several
next under the connectivity, next point, several connectivity project initiated by India with the SCO members like तुर्कमेनिस्तान तापी पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, India pipeline. Now we are writing those connectivity project which was initiated. Now we are writing those connectivity plan which was initiated by India into the Central Asias and SCOs with the SCOs member. ठीक है, तो first is तापी pipeline, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, India pipeline, right, which promised to meet the increased energy demand which promised to meet the increased energy demand of a fast growing Indian economy. Promise to meet the increased energy demand of a fast growing Indian economy. But due to Pakistan under Chinese influence, the project has been stalled since 2006. The project has been stalled. Stalled means it is not the progress is not happening. Project is now hindered, stopped because of China's Pakistan creating issues थ्रू द चाइनीज इन्फ्लुएंस, क्योंकि सीपैक वो जो BRI का रूट जो इनिशिएटिव है बिटवीन द चाइना एंड पाकिस्तान, देयर इज अ सीपैक प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से पाकिस्तान जो है इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर रखा है, क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, राइट, सिंस 2006 से इस पर भी कोई काम हुआ नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट. In 2002, India, Russia and Iran agreed to construct. In 2002, India, Russia and Iran agreed to construct 7,200. In India, Russia and Iran agreed to construct the 7,200 kilometers long INSTC, International North-South Transport Corridor, 7,200 kilometer long INSTC, that is International North-South Transport Corridor, which includes sea routes, rail and road link, connecting St. Petersburg, Russia with Mumbai. St. Petersburg, Russia to Mumbai. ठीक है. Under the INSTC, next point, the INSTC will decrease transit time by 40%. INSTC, International North-South, will decrease transit time by 40% and ferrite cost
FREIGHT ferrite cost by 30% compared to Suez Canal route, by 40% and ferrite cost by 30% compared to Suez Canal route. ठीक है। एंड 2022 में पहला शिपमेंट गया है। हाँ, ट्रांजिट हाँ, वहां से यहाँ आने का जो टाइमिंग है वो टाइम हो गया आपका कम 40% से। INSTC हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, रसिया से डायरेक्ट ऐसे आ रही है, पहले ऐसे आती थी, स्विस कैनाल होते, रसिया यूरेशिया होते हुए स्विस कैनाल होते हुए आ रही है वो, इजिप्ट से होते हुए। तो उससे टाइम भी कम हो जाएगा, और अगर रूट छोटा हो गया तो पैसे भी कम लगेंगे, सामान भी इजीली पहुंचेगा, तो चीपर भी हो गया, 30% चीपर भी हो गया। ठीक है। बट इट वाज स्टॉल्ड इन 2018 बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शन टू रसिया, ईरान। 2018 में यूएस ने सैंक्शन लगाया था ईरान को, सो ड्यू टू दिस इट हैज स्टॉल्ड, बट देयर वाज अ स्लो प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। सी रेल रोड, सी रूट, अब यहां से तो रोड नहीं जाएगी ना, तो मुंबई से जो भी कनेक्ट, जहां तक सी से जाना है, फिर उसके बाद अंदर रसिया के अंदर रोड और रेल रूट से कनेक्ट होता हुआ निकल जाएगा ईरान, फ्रॉम ईरान। पाकिस्तान तो है ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पाकिस्तान ने टापी में लगाया था, चाइना इन्फ्लुएंस में। नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। Work on INSTC stalled due to economic sanction on Iran stalled due to sanction on Iran it's clear. Next point. In July 2022, the first shipment via INSTC corridor reached Mumbai from Russia. ठीक है। रसिया से वहां पर आगे इन 2022 नाइट्रोजन ऑपरेशन फर्स्ट शिपमेंट। ठीक है। तो दिस इज INSTC एंड दिस इज इंडियाज इंटरेस्ट। नेक्स्ट, इंडिया हैज ऑल्सो इन्वेस्टेड हैविली इन चाबहार पोर्ट इन ईरान टू गेन डायरेक्ट कनेक्टिविटी विथ यूरेशिया। इंडिया हैज also invested heavily in Chabahar port in Iran to gain direct connectivity to Eurasia. Now we have seen Chabahar se wo the two Chabahar providing two connectivity, one through the Afghanistan, entering into the Afghanistan, ये this Jelaran, Jarans and Delaram route, Russia, Central Asia में, Eurasia, and if it is moving towards the west side, it is going to the West Asia के connectivity से भी दे रही है वो Chabahar port में, right? If you imagine this graph of this Chabahar, ठीक है, and it become operational in 2018. ठीक है, and it was operational in 2018. Clear? Next point.
India also invested heavily to connect Chabahar port with the conflict prone Afghanistan through Zalarang Delaram Highway. ZALARANG Zalarang DELARAM Delaram Highway. It's clear? Next point. In 2022, during first India Central Asia Summit, it was proposed that Chabahar port and Turkmenistan port be included in INSTC to facilitate direct trade with India. विथ इंडिया। और जो तुर्कमेनिस्तान, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ के, तुर्कमेनिस्तान इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ आईएनएसटीसी, तो फिर उसको क्यों ये कनेक्ट कर रहा है? द पोर्ट फ्रॉम अ तुर्कमेनिस्तान, अ सिंगल पोर्ट विच इज टॉकिंग अबाउट, तो राइट डाउन द नेम ऑफ दैट पोर्ट इन तुर्कमेनिस्तान विच इज टू बी कनेक्टेड विथ आईएनएसटीसी, एंड द पोर्ट नेम इज तुर्कमेनबासी पोर्ट। तुर्कमेन TURKMEN तुर्कमेनबासी पोर्ट, जिसको कनेक्ट करने की बात चल रही है आईएनएसटीसी से। It's clear? Next point. In 2023, India and Central Asia also formed a joint working group on Chabahar port full stop, continue the point. The joint working group expressed its commitment to implement international standards the international standards for अंतरराष्ट्रीय मानक, international standard for facilitating large scale private investment. Large scale private investment and signifies the port's
role, that is Chabahar Port role, and signifies the Chabahar Port role, bhumika, ROLE, role in delivering humanitarian assistance to Afghanistan. Delivering humanitarian assistance to Afghanistan. ठीक है. If you remember when we have done Afghanistan, India Afghanistan, तो इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड रूट कैसे हो रही थी? थ्रू दिस वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर. लेकिन पाकिस्तान ने एक कंडीशंस लगाया था कि आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो आप इंडिया में जा करके, लेकिन इस रूट से आपकी ट्रक खाली आनी चाहिए, आप कुछ लेकर के नहीं आओगे अटारी बॉर्डर से. देन इंडिया थ्रू दिस चाबहार पोर्ट has transported wheat into this Afghanistan during the crisis. And you remember in 2000 when it has been operationalized. Getting my point? So this is how the Chabahar port is also providing an humanitarian, helping the war-torn areas of Afghanistan through which alternative route. हाँ, अब इससे क्या हो गया? Through this Chabahar, now India and Afghanistan now has been connected. Is it clear? हाँ, लेकिन उसमें trade routes through route to India and Afghanistan might be cheaper, but now the Pakistan has no role in hinderings, because now in the current scenario Afghanistan and Pakistan do not having a good relations. Conflict चल रही है वहां पर, राइट. उनके खैबर पख्तून केपीज वाले इलाके में नाउ दे आर क्लेमिंग अफगानिस्तान, तालिबान आर क्लेमिंग देयर प्रोविंस, मैकमोहन लाइन जिसको हम बात करते हैं. आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. सो दिस इज कनेक्टिविटी. नेक्स्ट इज SCO काउंटर टेररिज्म डॉक्यूमेंट. SCO counter terrorism document. Any issue? आज सारे दुखों का निवारण हो जाएगा. नहीं, आप उसे उसमें ले गए लिटरल मीनिंग में. चलिए, SCO काउंटर टेररिज्म डॉक्यूमेंट. इन 2023 SCO डेवलप्ड कॉमन अप्रोच टू फॉर्म इन 2023, और 2023 की समिट SCO की कहां हुई है? न्यू दिल्ली में. इन 2022 इंडिया गेन द प्रेसिडेंसी ऑफ SCO, और इन 2023 इट वाज वर्चुअल समिट हुई थी. अब इस बार सितंबर में किसी और को वो चली जाएगी, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंसी. ठीक है. इंडिया के बाद शायद इट में भी ईरान हुड गॉट द NR, तो शायद ईरान को मिले. SCO डेवलप्ड अ कॉमन अप्रोच टू फॉर्म अ यूनिफाइड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट. SCO developed a common approach to form a unified list of terrorist, separatist and extremist organizations. Terrorist, separatist and extremist organizations. Next point. SCO South, we're still writing under the counter terrorism. ठीक है. And it is through the summit of 2023. तो SCO South, cooperation between competent authorities. Cooperations between competent authorities in countering terrorism,
comma separatism and extremism, separatism and extremism, including the implementation of the relevant programs for 2022 to 2024. Programs for 2022 to TO 2024, 22 से 24 तक के बीच का जो प्रोग्राम्स है, ठीक है. Now write down SCO importance to India. India become leader of INSTC. INSTC, International North-South Transport Corridor, and stress the importance of reliable, consultative, and stress means focused. The stress means focus या फिर दबाव देना, right? The importance of reliable, consultative and transparent connectivity projects with total rights of transit within the SCO region. With total rights of transit SCO region, rights of transit within the SCO regions. Next point. India used the SCO to persuade members country. India used the SCO to persuade members country including Central Asian regions and Russia, to create multilateral and bilateral working groups. To create multilateral and bilateral working groups on INSTC and Chabahar port. ठीक है. Now see, if you अभी तक आपने जो लिखा है, टू टर्म्स इज ऑलवेज बीइंग ऑन रिपीटिंग. जब भी हम सेंट्रल एशिया की बात करें या फिर हम इंडिया के वेस्ट नेबर्स की बात कर रहे हैं, तो देयर इज टू इंपॉर्टेंट टर्म इज राइट. वन इज INSTC एंड द सेकंड इज चाबहार पोर्ट. तो द क्वेश्चंस में आल्सो बी अराइज व्हाई इंडिया इज बैंगिंग ऑन INSTC और चाबहार पोर्ट, या इंपॉर्टेंस ऑफ INSTC एंड चाबहार पोर्ट. लिखना आपको यही है कि how it will be gateway to the Central and West Asia, because it has been repeating. SCO में भी बात सिर्फ इंडिया ने इस बार INSTC और चाबहार पे ही फोकस्ड किया है. SCO को इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए सिर्फ कनेक्टिविटी है टू गेट टू थ्रू द सेंट्रल एशिया. एंड व्हेन वी हैव डन अ सेंट्रल एशिया, वी हैव सीन दैट इट इज अ abundance of having a gas oil चीपर रेट वहां से, लेकिन रूट इसको एक ही मिलेगी ट्रांसपोर्ट करने के लिए.
चाइना तो देगा नहीं एक्सेस अपना रूट करने के लिए, अंडर द चाइनाज इन्फ्लुएंस पाकिस्तान भी वो रूट खोलेगा नहीं, दैट दिस रूट। तो उसके पास बचता क्या है, एक तो आईएनएसटीसी का ऑपरेशनल होना, और तापी ऐसे ही हॉल्ट पर चला गया, द तापी वॉज, तो आईएनएसटीसी वॉज ऑल्टरनेटिव, क्योंकि तापी भी अगर ऑपरेशनल हो जाता, if the Pakistan does not have put an hindrance, that would also connect easy supply of a gas energy from the Central Asia, लेकिन that is halt. So due to that now only two options India having. One is चाबहार, जिसके थ्रू वो ईरान के थ्रू वो अफगानिस्तान एंटर करेगा जालाराम डेलाराम प्रोजेक्ट के थ्रू, और फिर वहां से वो सेंट्रल एशिया करेगा, यानी रेल, रोड और सी रूट के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। एंड वन इज द आईएनएसटीसी, जिसको वो चाह रहा है कि चाबहार को भी आईएनएसटी से कनेक्ट कर दें, और तुर्कमेनिस्तान के तुर्कमेन को भी हम पोर्ट को उसमें इंक्लूड कर लें। सो इट विल बेनिफिट इंडिया, डबल बेनिफिट। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस इज एन इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन मे बी कम इन द डिफरेंट वे कि वाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, वाई एससीओ इज इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन में कैन नॉट कम इन द वे कि वाई एससीओ इज इंपॉर्टेंट, बट इट maybe that why INSTC or Chabahar is so strategically important to India. समझ रहे हैं? So answer should be written from here, जो आपने लिख रहे हैं वही में, but the language should be changed. प्राइमरी फोकस अब कहां पर होगा फिर आपका INSTC और SCO के ऊपर, सॉरी चाबहार के ऊपर, rather than from SCO. Yes or no? It's clear? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। India joined the SCO ensure peace and security. Next point. India joined the SCO to ensure peace and security in its extended neighborhood. In its extended neighborhood. Extended neighborhood समझ रहे हैं ना, वेस्टर्न एशिया एंड सेंट्रल एशियन, ठीक है। एंड PITCHED and pitched strong mechanism of counter terrorism strong mechanism of counter terrorism under the SCO RATS. SCO is Shanghai Cooperation Organization, RAT is Regional Anti-Terror Structure. So SCO RAT is Shanghai Cooperation Organization's Regional Anti-Terror Structure. It's clear? But it has faced opposition from China and Pakistan. But it has faced opposition from China and Pakistan. चाइना चाहती ही नहीं है कि पाकिस्तान, देखिए चाइना ने सैंक्शन लगाया है यूएन में भी, दैट व्हेन अब देखिए इंडिया एंड यूएस बोथ आर बैकिंग वो जो पाकिस्तान में जो टेररिस्ट जमात उद-दौला के जो और आपके और भी जो ग्रुपिंग्स है उनके जो लीडर है उसका जो उसको टेररिस्ट, वर्ल्ड टेररिस्ट ये करने का, अनाउंस करने का, बट चाइना हैज पुट सैंक्शंस, क्योंकि ऐसा करने से उनका एक्टिविटीज इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा, तो पाकिस्तान हैज टू रेस्ट्रिक्ट देयर एक्टिविटीज। उससे फिर इंडिया को क्या होगा,
बैलेंस करने में दिक्कत आएगी, तो इंडिया को बैलेंस करने के लिए ही चाइना ये काम कर रहा है पाकिस्तान के थ्रू। सो चाइना इज ओनली बैकिंग पाकिस्तान जस्ट टू काउंटर इंडिया, इसलिए करने नहीं दे रहा है कि टेररिस्ट ग्रुप आप घोषित नहीं कर सकते, कैन नॉट अनाउंस देम। वंस इट हैज बीन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप, देन इट हैज अ इंटरनेशनल प्रेशर टू कर्व देम। रीजनल तो ठीक है, बट इंटरनेशनली इट्स इज टू बी कर्व देम। मान लीजिए जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर ले इन इंडिया में, तो उसका इम्प्लीकेशंस अलग होता है, यस और नो। लेकिन विदाउट रिकॉग्निशन इट कैन डू एनीथिंग। सो सिमिलरली ऑन द सेम लाइन, सो अगर इंटरनेशनली और जैसे अजहर महमूद इंटरनेशनली अगर रिकॉग्नाइज कर ली जाए उसको टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट, तो नाउ दे हैव टू कर्व ऑन इट, उसको सरेंडर करना होगा, उस पर केस चलाना होगा व्हेनेवर ही वाज, दे डू नॉट गिव अ प्रोटेक्शंस टू देम, फंडिंग, सब चीज, एवरीथिंग। सो अगर ऐसा होगा तो इंडिया को फ्री हैंड मिलेगा, बट चाइना वांट टू काउंटर द और बैलेंस इंडियन रिलेशंस, सो बिकॉज ऑफ दिस दे आर हिंडरिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सो हैव रिटन बट हैव फेस्ड ऑपोजिशन फ्रॉम China and Pakistan. In 2020, next point, in 2021, all SCO members except China and Pakistan participated in a regional summit. In 2021, all SCO members except China and Pakistan participated in a regional summit to discuss Afghanistan. Discuss Afghanistan. Why they want to discuss Afghanistan? Because Taliban ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान, टेररिस्ट ग्रुप तालिबान was taken over the अफगानिस्तान। तो आप पीस कैसे होगी, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कैसे होगी? So this is the reason. Pakistan is an important region now in this area. Are getting my point? And it is an observer state भी। आपने लिखा बेलारूस एंड this मंगोलिया एंड अफगानिस्तान आर ऑब्जर्वर स्टेट। और इस रीजन में पीस और सिक्योरिटी रखनी है तो नेशंस में भी तो सिक्योरिटी देनी होगी ना, पीस स्टैब्लिश करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। थ्रू द एससीओ the Central Asian regions have endorsed and supported through the SCO. The Central Asian regions have endorsed, ENDORSED, endorse. Endorse means supported. Endorse and supported India's position for an Afghan-led, inverted comma में Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-controlled, inverted comma close, Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-controlled, inverted comma close, peace process in Afghanistan. And this we have discussed when we have discussed Afghanistan. Yes or no? Afghan-led and Afghan process. Next point. India has used SCO forum to raise the issue of Chinese ingress. India has used the SCO forum to raise the issue of Chinese ingress, INGRESS, ingress and
RESS, ingress, and ingress लिखिए बता रहा हूँ, ingress and belligerent approach, BELLIGERENT, towards its neighbor, belligerent approach towards its neighbor. इंग्रेस और बेलिग्रेंस का मतलब हो गया इंटरफेयरिंग इन द अदर नेशंस टेरिटरी, डिसरिस्पेक्टिंग, मतलब वो कैसे चाइना कह रहा है दैट साउथ चाइना से इज माय प्रॉपर्टी, ताइवान को भी कह रही इट इज चाइनीज प्रॉपर्टी, राइट, बिलोंग्स टू चाइना. हांगकांग, अभी कुछ साल पहले हांगकांग में देयर वाज एन यू कैन से मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट द चाइना. वहाँ पे चाइना ने बहुत ब्रूटली दे हैव क्रश द हांगकांग, स्टूडेंट को भी मारा वहाँ पर एंड एवरीथिंग, राइट. सो नाउ दे हैव बीन alleging the China that ingress, they are interfering, they are capturing, right. So that India has used the SCO forum to raise the issue of Chinese ingress and belligerent approach towards its neighbor. Full stop. Continue the point. India has stressed a respect for territorial integrity, a respect for territorial integrity under SCO's Shanghai spirit. Respect for territorial integrity under SCO's Shanghai spirit. It's clear? ठीक है. Now write down the way forward. ठीक है. First point. Due to Russia-Ukraine conflict, crazy tunes, no one is watching you. फिर आप क्या कर रहे हैं? मैंने ऐप है वो ऐप, अच्छा एपिक रिप्लाई, ओके. ड्यू टू रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, the Central Asian regions are trying to reduce their traditional security dependence. Due to Russia-Ukraine conflict, the Central Asian regions are trying to reduce their traditional security dependence on Russia. Reduce their traditional security dependence on Russia. And they are looking towards India as a reliable partner. And they are looking towards India as a reliable partner. Next point. The SCO has provided India a reliable SCO has provided India with a platform that needs to be leveraged. That needs to be leveraged to meet its
geopolitical and geostrategic goal. And geostrategic goals. Next, India must use India's Central Asia dialogue. India must use India's Central Asia dialogue to develop and strengthen its cooperation with Central Asian regions and Iran. Central Asian regions and Iran. It's clear? So this is India SCO. It's clear? Now next is BIMSTEC, India BIMSTEC. ये हमने नहीं किया है ना? India BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperations. It's clear? ठीक है? And when BIMSTEC was formed? 1997. अच्छा यहाँ लिखा है 1997 बांग्लादेश बैंकॉक डिक्लेरेशंस. सेक्रेटेरिएट कहाँ है इसका? ढाका, बांग्लादेश में. सो दीज आर द मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक. दे हैव 7 members, right? Host 22% of the world population and account 3.8 trillion of GDP. ठीक है? This all we have written somewhere else in the relation. So it has a Bhutan, Myanmar, Thailand, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and India. This is BIMSTEC. ठीक है? चलिए let's finish it. ऑनलाइन वॉर चल रही है, कमेंट वॉर. Write down. In 2021 BIMSTEC, in 2021 in BIMSTEC meeting, India signaled to the need of India BIMSTEC. In 2021 in BIMSTEC meeting, India signaled to the need of signal and hint, it has given a hint, signal it to the need for a paradigm shift, PARADIGM, paradigm shift, along the line of framework
to raise the intensity of cooperations and regional integrations. To raise the intensity of cooperations and regional integrations. Which will help India to grow, which will help India to grow a 5 trillion economy. A 5 trillion economy. Next point. India has linked its Sagarmala project or concept, SAGARMALA, Sagarmala project. What is Sagarmala project? स्ट्रिंग ऑफ पल्स सागरमाला कैसे? इंडिया का प्रोजेक्ट है स्ट्रिंग ऑफ पल्स, आपने लिखा है इंडिया लिंक्स इट्स सागरमाला प्रोजेक्ट। पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए, पोर्ट लेड डेवलपमेंट, जितने भी सी रूट पोर्ट है ना, दैट इज टू बी डेवलप्ड। तो पोर्ट जैसे मुंबई में आपका जवाहर पोर्ट है, जवाहर ट्रस्ट पोर्ट, उसको दूसरे पोर्ट से थ्रू द रोड लिंक टू कनेक्ट, connecting all important port with the minor ports, that is Sagarmala project. India का project is very important project, ठीक है। So India linked its Sagarmala project with transnational maritime security with transnational maritime security. ओहो, कुछ अलग ही होने लगा अब तो। ट्रांसनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द नॉर्थ ईस्ट फॉर ट्रेड, in the northeast for trade, tourism and people to people connectivity. Trade, tourism and people to people connectivity. It's clear? So now write down second heading, challenges. For challenges, first, the successful implementation of Act East policy Act East policy depends on India's ability to balance the regional socio-political factors with establishing land, sea and air connectivity with BIMSTEC and ASEAN nation.
Next point. The BIMSTEC region is currently under strain. The BIMSTEC region is currently under strain. Like Myanmar and Thailand engulfed in political turmoil. Myanmar and Thailand engulfed in political turmoil, means surrounded or turmoil. 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 Next point. The India's Kaladan project passes through Myanmar's Rakhine state. Kaladan project. India's Kaladan project passes through Myanmar's Rakhine state. RAKHINE. Rakhine state. Which has already suffered a series of hurdles, including a series of hurdles including difficulty in land acquisitions, the bankruptcy of a company involved in its development, bankruptcy of a company involved in its development, and delay in construction in its development. जो कालादान प्रोजेक्ट बना रही है वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, अब पैसे ही नहीं उनके पास. एंड डिले इन कंस्ट्रक्शन due to clashes between insurgent groups. Clashes. The delay in construction due to clashes between different insurgent groups. Clear? Next challenge. The India-Myanmar-Thailand trilateral highway. The India राम जी, नमस्ते. शिवम जी, राम फ्यूचर आईएएस, वेलकम टू क्लास. Thailand trilateral highway, crucial to the development of Northeast as a gateway to ASEAN. Crucial to the development of Northeast as a gateway to ASEAN is also under a cloud of uncertainty.
under a cloud of uncertainty. Full stop. Continue the point. India has reportedly offered to expand the highway. India has repeatedly offered to extend the highway to other countries like Cambodia, Laos and Vietnam into the project. Clear? So these are the challenges to the BIMSTEC which India faced. Now write down the way forward. First, resolving these regional issues can only happen through an approach. Resolving these means what we have written in the problem. Regional issues can only happen through an approach focused focus on creating institutions resolving these issues can only happen through an approach focused on creating institutions to plan and implement developmental project institutions to plan and implement developmental projects to minimize or eliminate political and social issues. Political and social issues. Next point. Japan's involvement can serve the capacities of BIMSTEC nations. Japan's involvement when we are doing the Africa, we have seen the Asia Africa Regional Forum, जिसमें इंडिया और जापान वो कनेक्टिविटी क्रॉस करने की चाहते थे, तो yes, so it will go through. Japan is here somewhere in Indo-Pacific, so it will also impact the BIMSTEC, right? Bay of Bengal वाले region के सारे हैं इसमें nations. Enhance the BIMSTEC nations. Next point. The Northeast has emerged as a convergence between Japan's involvement can serve in increasing the capacities of BIMSTEC nations. Capacities of BIMSTEC nations. Next, Northeast has emerged. India's Northeast. We are talking about the India's Northeast. These reasons. So India's Northeast has emerged as a convergence between
emerge as a convergence, convergence समझ रहे हैं ना, they are merging towards convergence between India's Act East policy, India's Act East policy, between India's Act East policies and Japan's free and open Indo-Pacific vision. Open Indo-Pacific vision. Next point. Japan and India are collaborating in countries like Sri Lanka, Bangladesh and Myanmar. Japan and India collaborating in countries like Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, to promote infrastructural linkage and development. Now, why Japan is so interested in this reason? इंडिया के साथ क्यों मतलब इतना इंटरेस्ट हो रहा है, हेल्प कर रहा है इंडिया को चाइना को काउंटर करने के लिए? इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि जापान हैज एन वेरी लॉन्ग हिस्टोरिकल इंटरेस्ट टू कैप्चर चाइना ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में वी हैव सीन, तो दोनों के बीच में दैट इज देयर इज अ डिस्प्यूट्स. सो बिकॉज ऑफ टू काउंटर द चाइना, जापान इज एंगेजिंग विथ इंडिया. ठीक है, to promote infrastructure linkage and development. Next point, Japan's development work in Northeast is also expected. Japan's development work in the Northeast is also expected to boost connectivity. Is also expected to boost connectivity between BIMSTEC members. Between BIMSTEC members. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. India become a member of India-Japan Act East Forum. India become a member of India-Japan Act East Forum, which primarily oversees projects targeting the economic modernization of Northeast. Overseas projects targeting the economic modernization of the Northeast, which includes national highways of Mizoram, Manipur and Tripura, which includes national highways of Mizoram, Manipur and Tripura. Mizoram, Manipur and Tripura, comma, biodiversity and forest management in Sikkim, biodiversity and forest management in Sikkim,
नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय. फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन सिक्किम, नागालैंड, मेघालय एंड त्रिपुरा. And water supply and sanitation in Assam. And water supply and sanitation in Assam. Next, the Northeast is culturally rich. The Northeast is culturally rich and is a biodiversity hotspot. And it has a huge potential to attract tourism from BIMSTEC countries. And it has a huge potential to attract tourism from BIMSTEC countries. Comma, to facilitate greater tourism policy makers must prioritize easing of visa requirements. Easing of visa requirements. ठीक है. Next, greater focus is needed to enhance. Greater focus is needed to enhance the connectivity of inland waterways and river routes in Northeast. Like Sagar project in West Bengal. And like Sagar project in West Bengal. Next, SEZ. What is SEZ? Special Economic Zone. And EEZ, Exclusive Economic Zone. SEZ can be set up for specific projects. और फायदा क्या है SEZ का? Do you know the meaning of tax holiday? टैक्स हॉलीडे टर्म सुना आपने? टैक्स हॉलीडे, कर छुट्टी, दैट डे नहीं. एसईजेड एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कंपनीज को इन्वेस्ट करने से ना 3 to 5 years का टैक्स हॉलीडे मिलता है. मीन्स जो भी उस पर वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, दे डू नॉट नीड टू पे द टैक्स ऑन दैट जनरेशन ऑफ इनकम. तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिलेगी. भाई जहाँ वहाँ लोग चले जाएंगे, वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे
टैक्स नहीं देना अपने कमाई पे, तो इससे उस एरिया में भी बूस्टिंग होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस, टू बूस्ट दैट एरियाज विद द डेवलपमेंट, दिस कंसेप्ट ऑफ SEZ एंड EEZ हैज कम अप, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड एरियाज। 3 या 5 साल का रहता है, तब तक इनकम पे पैसे नहीं देना होता है। हाँ भाई, टैक्स इसलिए टैक्स हॉलीडे बोलते हैं। इकोनॉमी आप इसके डिटेल पढ़ेंगे आप। सो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नहीं, वी आर कंटिन्यूइंग विद द पॉइंट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ can be set up for specific projects like timber and food processing. In all the 8 northeastern state. Food processing वो जो आपका दिस नहीं आता है, चिप्स बनाना, मटर ये करना, फ्रोजन करना, that is food process. अच्छा, sorry, in all 8 northeastern states, total 8 हैं, 8 EIGST, north eastern states. It's clear? So this is India and BIMSTEC. In 8 northeastern states, यहाँ पर टिम्बर में SEZ होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग होना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज इंडिया एंड बिम्स्टेक एंड दिस इज ऑल फ्रॉम द IR। एक आपका रह गया, दैट इज डायस्पोरा। आई विल प्रोवाइड यू द PPT और दिस क्या बोलते हैं PDF विद इन 2-3 days। ठीक है? हाँ, तो ऑल वी हैव exclusively and exhaustively cover the syllabus, though it has took more times than the decided, but exhaustively we have done the syllabus what we have discussed in the very first class of this. There is और कुछ है, जैसे कुछ करंट है टॉपिक, जैसे आपका ग्लोबल साउथ कमिटमेंट ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है? देन अब G20 के लिए what you have to do, just go through the current happening. ठीक है, क्या हो रहा है इंडिया का, क्या, क्योंकि G20 and SCO both has been chaired by India in this 2022, so there is a potential of having a questions इन दोनों से। हाँ, एक क्वेश्चन होगा इन दोनों में से कहीं से भी हो, लेकिन होगा। तो फॉर दैट करंट SCO we have done, G20 is continuing, तो उसके करंट से परस्पेक्टिव जो भी है ना, दैट, and also we will give you the framework for this. ठीक है? So diaspora, this global south and G20 framework I will provide. ठीक है? Rest is done. गुरुवान है, गुरुमान है, समाज में सबसे ऊपर गुरु का ही सम्मान है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अभिषेक जी। So all the best for your future. Right, we will be in touch whenever you have any issues, your issues will be resolved. ठीक है? चलिए, so thank you and very best of luck for your future. जल्दी से सिलेक्शन लेकर के IAS बनिए। Thank you.